with worship is a response towards God's greatness. Under the same theme, Psalm number 136, verse 1 is starting. Psalm number 136, verse 1 starts under the same theme. Give thanks to the Lord, for He is goodness. He is good. For His steadfast love endures forever. Under the same theme. This psalm is considered as a great Hallel, एक महा स्तुति. Amen. This psalm also has one more title, the Great Hallel. The Great Hallel. Hallel means stuti, praise, praise. This is a summary of Old Testament historical events. Psalm number 136 is a summary of Old Testament historical events. हर एक वचन में परमेश्वर पुराना समय में जो बातें किया उसको याद कराते हुए बोलता है. एक सेंटेंस रिपीटेड है उसमें. For His steadfast love endures forever. So this is an Old Testament summary. Author name we don't know, but scholar says might be David, Asaph, or sons of Korah. Might be David, Asaph, or sons of Korah. Might be David, Asaph, or sons of Korah. Some scholars even says after the Babylonian exile they might have wrote this. Then might be Ezra, because Ezra got the duty to remind all the past events and calling the people to worship. So Ezra, David, Asaph, or sons of Korah before Babylonian exile. So if we say it was composed after Babylonian exile, might be Ezra, because he got the duty to remind all the past events. If we divide verses 1 to 3, a call to give thanks to the Lord. Verses 4 to 9, giving thanks because of the creative powers of God. परमेश्वर ने इतना सारी सृष्टियों को सृष्टि किया, इसलिए धन्यवाद करना है. Giving thanks because of God's creative power और for God's creative power. पूरा सेंटेंस लिखने का नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही तुरंत लिखना. 4 to 9, 10 to 15, reminding God's deliverance of Israel from Egypt. ऐगुप्त से इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने आजादी किया, इसको याद दिलाता है. 16 to 22, celebration of God's guidance through the wilderness. Celebration of God's guidance through the wilderness. मरुभूमि रेगिस्तान का समय में परमेश्वर कैसे अगुवा किया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करना. 23 to 25, recognizing God's compassion towards His people. 23 to 25, recognizing God's compassion towards His people. Verse 26, final call to praise. अंतिम बुलाहट है स्तुति करने के लिए. ये माइक इधर उधर रखा है, नीचे गिर गया तो फिर काम नहीं करेगा. कोई एक व्यक्ति इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा. प्रकाश आप करेगा तो बोलना, नहीं तो नहीं. इधर रखा तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा गिरा तो फिर गया. आराधना होने के बाद लेकर उसका अंदर ही रख देना, जगह है. Theological themes, steadfast love of God. उसका हिंदी क्या है? हमेशा बना रहने वाला परमेश्वर का प्रेम. उसका छोटी शब्द क्या है? अनंत प्रेम.
अनंत प्रेम, अनादि प्रेम। नहीं, वो रिपीट हुआ वाला वचन क्या है हिंदी में, वही है। उनकी प्रेम सदा, ऐसा कुछ होगा। बीच बीच में करुणा सदा की है। पॉइंट नंबर 2, गॉड एज क्रिएटर, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर बचाने वाला है, रिडीमर, परमेश्वर संभालने वाला है, सस्टेनर, परमेश्वर विश्वासी योग्य है, फेथफुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर सस्टेनर है, संभालने वाला है। 5th वन, परमेश्वर के विश्वासी योग्यता। It uses literary devices like repetition, parallelism, imagery, inclusive. Repetition, parallelism, imagery, inclusive. In ancient Israel, Jewish people used this psalm during temple ceremonies and temple worship. Temple ceremonies, temple worship and festivals. टेम्पल में आराधना का समय, त्योहार का समय या झुंड में मिलने का समय इस भजन को उपयोग करते थे। As it is same for Christian people also. You can compare this psalm with Psalm number 135 and Deuteronomy 26, 5-9. व्यवस्था विवरण 26 का 5 से लेकर 9 और 135 भजन से इसको तुलना कर सकता है। Even today, Psalm number 136 stands, or it inspired to make many songs and prayers. बहुत सारा गीत या प्रार्थना और नया नया बातें लिखने के लिए बहुत लोगों को आज भी इस भजन, इस साम इंस्पायर करते रहता है। एंड एप्लीकेशन फॉर दिस साम गिव्स अस ए पैटर्न फॉर कम्युनिटी वर्शिप, ए पैटर्न फॉर कम्युनिटी वर्शिप। कम्युनिटी, समाज, झुंड मिलके कैसा आराधना कर सकता है, इस भजन हमको एक अच्छा एक तरीका हमको सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वचन को पढ़ने के समय ज्यादातर हम कैसे पढ़ेगा, वो मेन बात है पादरी पढ़ेगा, सेकंड जो रिपीट हुआ है वो विश्वासी लोग पढ़ेगा। द प्रीचर और द टीचर और द पास्टर विल रीड द मेन वर्स एंड द बिलीवर विल रिसाइट द बी पार्ट ऑफ एवरी वर्स। Like that only we read mostly. So this psalm gives us one more application. It is the duty of the leader to remind the believers all the past events. पुराना सारी बातों को इस वचन में याद दिलाता है। याद दिलाने के बीच में विश्वासी लोग क्या बोलेगा, His love endures forever. Conclusion done. So any doubt from 136?